हमने जब ऐसा बोला उन्होंने तो आपने गूगल करना चाहिए, मोबाइल यूज करना चाहिए। और गूगल सर पे गूगल करके हम सर को क्वेश्चन इसके बारे में ऐसा क्यों, इसके बारे में ऐसा क्यों। क्या शॉर्ट व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, बोलिए ना। कोई भी मैम आप बताइए, क्या आपको क्या क्या समझ में आया मैम, पेपर के बारे में आपको क्या समझ में आया बताइए। रिसर्च जो करने, जैसे लेक्चर वगैरह और JRF के थ्रू कोई limitation नहीं है। सिर्फ एक information। बोला ना सर, मेरे मोबाइल चल सोनाली मैम को सदर का सर आपका पीपीटी लगा ना आपका सर आपका लेक्चर। सर पीपीटी लगा ना आपको। हाँ, आ जाओ नौशाद सर, तब तक बात करो। सोहेल सर इधर आओ। सोहेल सर ने क्वेश्चन पूछा था। सोहेल हमारा बच्चा है अब्दुज का, उसने एफकेट का एग्जाम पास किया था, इंट्रोडक्शन कुछ पूछना है तो बात कर सकते हो। कल का पीपीटी हमारे जितने टीचर होता है ना सर का, वो टीचर का क्वालिफिकेशन नेसेसरी है कि वो ग्रेजुएशन के साथ उसने कोई एग्जाम पास किया है। उसने एफकेट करके एग्जाम पास किया है। कौन सा एग्जाम पास किया है? एफकेट के बारे में बताओ, कब देते हो, क्यों देते हो, पता एफकेट के बारे में बात कर, एफकेट के बारे में बात कर। तो एफकेट का पोर्शन बताओ, सिलेबस क्या है ये आपको स्कूल में पढ़ाना है। देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है, एग्जाम कब दे रहा है, एग्जाम कब दिया उसने, ग्रेजुएशन के बाद। सिलेबस कौन सा बन गया, 10 के नीचे का। दोबारा बोल रहा हूँ, ये बच्चे ने जो एग्जाम दिया एफकेट कब दे रहा है वो एग्जाम, ग्रेजुएशन को। और उसका सिलेबस क्या है, 10th के नीचे का, 8, 9, 10 का सिलेबस आता है। क्या क्या आता है जरा बताओ सर। कितने मार्क्स का इंग्लिश, पता ना इंग्लिश कितने मार्क्स का। इंग्लिश के अलावा और क्या सब्जेक्ट है, बैच का लेवल क्या होता है, बात को समझो। तुमको समझने के लिए बिठाया है कि जो एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद देना है उसका जो लेवल है, मैथ्स के कितने टीचर है यहाँ। और
Basically, Ice Town by Akash Rathod. We are also making a movie based on this book. Currently, I am writing with few other writers the screenplay for a Hindi adaptation, and also I am working on my next novel. What is the name of the next one? Next, Turtles Can Fly. Turtles Can Fly. Turtles can fly. Yes. Can turtles fly? Oh, then why turtles That's can the fly? metaphor. They will fly. This book, Ice Town, when the people read it and then eventually they are like, there is no ice in that town. So it's basically a metaphor that nothing eventually lasts and the person has to go on finding a new ice towns without getting stuck at one place. He should move on when the things are not working out. So basically, that's the philosophy of this title. The first title was The Diary of a Young Boy. By the time I finished the book, I moved on to the Ice Town. So this is the starting of this book, but I don't know whether I will keep this title by the end. That's how it works. Anyway, so Anybody in the audience, what is the difference between metaphor and simile? That is okay. That is your English part. Talking about the teacher training part. I am using a statement that metaphor is an implied simile. What do you mean by that? When I say, सर देखो ना, metaphor is an implied simile. तो वो टीचर ट्रेनिंग में क्यों बात करना? आपने जो बताया वो एब्सोल्युटली राइट है. इट इज एज पर द ग्रामर रूल्स, एज पर इंग्लिश रूल्स. बट आई एम आस्किंग why are we why is he using metaphor, or why do we use simile? What is the use of figure of speech, especially in teachers training? ओपन क्वेश्चन. ये गूगल करो. गूगल को देखो, अभी एक चीज आया नया जिसको हम बोलते प्रॉम्प्ट. क्या बोलते जरा देखो सर. प्रॉम्प्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो बोलते हैं ना, चैट जीपीटी अपने से इतना होशियार है. उसको अगर करेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ना, खुद जवाब देगा. तो अगर टीचर को एआई यूज करने को नहीं आएगा ना, तो टीचर पीछे रह जाएगा. अभी हमारे टीचर्स है ना, तो बड़े बड़े बेल लिखते हैं, डी नोट. मैं बोले इतना बड़ा इंग्लिश कहाँ से आ रहा उनको? तो मालूम पड़ा चैट जीपीटी से कॉपी किया. इमोशनल बेल, नाना मर गए, दादा मर गए, ये मर गए. तो सब ये सारी चीजें इतना अच्छे से लिखते हैं ना, तो मालूम पड़ता है कि ये सब चैट जीपीटी से है. चैट जीपीटी को जनरेटिव एआई में उसको अगर आंसर देना ना, सही सवाल जरूरी है. सही सवाल आधा जवाब है. तो सही सवाल पूछने का तरीका उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट. कितने लोगों ने सुना प्रॉम्प्ट क्या होता है? PROMPT. PROMPT. प्रॉम्प्ट को सीखना पड़ेगा. करोड़ों रुपया कमा सकते हैं अगर आपने प्रॉम्प्ट सीखा तो. प्रॉम्प्ट मतलब एआई को जो सवाल पूछने का ना, उसका एक तरीका है. तो आप गूगल में पूछो व्हाई मेटाफर इज कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली. गूगल आपको जवाब देगा. एनीवन? व्हाई मेटाफर इज कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली? यस मैम. रीड. इट्स ओके. हाँ, टेल लाउडली. मेरा क्वेश्चन है कि टीचर ट्रेनिंग में क्यों?
Most important point, teachers, that we forget when we compare two children, it becomes a big problem for them. They will not show it on the face, but it will always be a big problem. उसको हम लोग बोलते हैं टॉन्टिंग. पेरेंट्स आते हैं ना, उसका तो बच्चा पास हो गया, मेरा तो बच्चा पास नहीं हुआ, तो वो बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है. You cannot compare two different people. They are two different individuals, two different students. उनके क्राइटेरिया अलग रहते हैं, उनके क्वालिटीज अलग रहते हैं, उनके ट्रेड्स अलग रहते हैं, TRA, ITS, और उनकी एबिलिटी भी अलग. You cannot compare the children in the class. So that you have to be very sure. The other part is you can give examples. जैसे मैं बोलूंगा, अगर असेंबली में हम लोग क्या बोलते हैं, A is like B ना, और मेटाफर में हम क्या बोलते हैं, A is B. तो वो एग्जाम्पल दे सकते समझा. कैन यूज metaphorical terms to explain to them, but never compare two different individuals in the class. The teacher has to be very careful in that respect. Ma'am, you want to elaborate, because you're teaching English from a long time. I don't know. But if you study other materials, what that material so in some because the you have an answer why then That is called mental abuse. क्या बोलते हैं इसको? और होता है कई जगह होता है. हर टीचर का पेट होता है, फिर वो बाकी चीजों, बाकी बच्चों को बहुत हर्ट करता है कि टीचर इसी को क्यों बात करती है, इसी को क्यों बोलेंगे. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इससे पहले भी आप लोगों को समझ था, और इस पर बार बार बात करना चाहिए. ये तीन अलग है. सोशल क्वेश्चन अलग चीज है, इमोशनल क्वेश्चन अलग चीज है, और इंटेलिजेंट क्वेश्चन अलग चीज है. SQ और EQ तो है, that should be greater than IQ. Then only the boy or girl is successful. इसमें बिल्कुल टीचर काम नहीं करता, वो क्या है, AQ. AQ is called adversity question. हम बच्चों को जीतना सिखाते हैं, हम बच्चों को 5 होना सिखाते हैं, हम बच्चों को फर्स्ट तारीख को सिखाते हैं. वो बच्चा सेकंड है तो क्या, तो कोई नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Teachers especially have to be very careful about adversity question. Everybody cannot come first in the class. मैं हमेशा डायलॉग बोलता हूँ, हार कर जीतने वाले को बच्चों को बताना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, so let's start. Basic देखिएगा, those people who are teaching English, they might have noticed it. Teaching language to the grown up is the most difficult thing. Okay, when the student reaches to your class and he's probably in 11th class, 10th, 9th, by the time we somewhere lose our curiosity also. And it is a work of patience. When you're teaching somebody a language, they need patience, you need patience, both on the both sides. As a teacher, you are trained to keep the be patient with the students, but students are not patient. They're like, if they have to learn the language, you teach them something just like the maths formula or any other subject, like a chapter or something, and then you will learn it. That is their mentality. So as a teacher, it becomes very difficult. I had no intention of becoming an English teacher. I wanted to become a writer, and for that I used to read a lot of books, and then eventually I got into English literature because of the writing. And later on, I realized that there are many opportunities in the teaching English. Specifically, I was unaware about the competitive exam, how much weightage they give, just like NDA, CDS, SSC, CGL, banking, railway. There are so many exams which are primarily dependent on the English. And there are two types of students that you will find in this criteria. Those whose English is good, who are probably from convent school. But still, there are two different type of students also. Those who can speak the English and those who can actually solve the questions in the exam, competitive exam. कभी कभी ऐसे होगा कि some student might not know the English,
कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, but he will score really well because he knows the rules and all the basics of the grammars. The other student can speak properly in English and might not able to solve the questions. So they are very two different things: to teaching for the competitive exam and actually teaching them a language. Uh, for example, you will find that in one of the article that I have read, in Indian people speaks proper or the correct grammar than the Europeans or the even the Britishers, because when they are speaking, they are just taking it as a language, while we are learning every small rules and following them properly. But for them, like when you are talking in your mother tongue, you don't notice which grammar or what kind of simile, you just speak. You don't even notice it. Okay. So, since I have come, mostly I will speak to you from my own experiences today. The thing is that I enjoy teaching English now is because I feel that most some students who come from rural background, they really need an English teacher, because when they have to write the answers in the exam, they need English, irrespective of the subjects they are learning. If they have to write the answer of the history, they probably need to write it in English, and they need a language. They need to form the sentences, and that puts them backward. और वो inferiority complex आ जाता है उन बच्चों के अंदर. तो एक लैंग्वेज टीचर का काम बहुत ही खूबसूरत है, इफ यू एंजॉय, क्योंकि तुमको पता है कि उस स्टूडेंट को तुम्हारे अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज वो हर जगह पीछे रह जाएगा. इफ ही कांट कम्युनिकेट, देन ही कांट मूव फॉरवर्ड, नो मैटर हाउ गुड इज इन अदर सब्जेक्ट्स. और एक चीज, व्हेन द सर वाज टॉकिंग, आई इट केम टू माय माइंड, व्हेन द स्मॉल चाइल्ड इज लर्निंग अ लैंग्वेज, जब छोटा बच्चा मराठी सीख रहा है मान लो, जब वो गलती करता है तो हम मुस्कुरा देते हैं कि अरे रे, इसको आम को अगर कुछ और पुकार दिया, उसने एप्पल को नहीं प्रोनाउंस कर पाया, तो हम वी जस्ट लाफ एंड वी एंजॉय. The same thing you have to do when you are teaching a language to probably the student who is 18 years old. You can't just like, I just taught you and you made a mistake again. If you do that, then he will never learn. छोटे बच्चे ने पहली बार जब गलती की है, to get angry, probably he will have that fear and might not pronounce the same word again in front of you. आप enjoy करते हो, because of that he enjoys learning more. और अगली बार आपके सामने बात करने को उसके अंदर वो झिझक नहीं रहेगी. तो कहीं ना कहीं आपको उस मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा. बाकी सब्जेक्ट को पढ़ाना और इंग्लिश पढ़ाना इज टोटली डिफरेंट. आई टीच ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट, बट दैट इज टोटली डिफरेंट. बट लैंग्वेज पढ़ाते हुए आई हैव नोटिस माई सेल्फ, आई बिकम वेरी kind with the students. I usually don't get really angry when I'm teaching the language. Just now I noticed that I taught to the NDA student tenses, and they have forgotten the structures. They are making the mistakes even in the morning. But every time I reach to the stage that I have taught you 10 times, I still remember that I'm teaching the language. I remind myself, and I'm not supposed to lose my patience at all, no matter what. So I convince when I'm teaching the language to the student that no matter what, I'll be there for you. फिर कितनी भी गलती करो, कितना भी टाइम लगे, I never lose the patience when I'm teaching the language. Now, apart from that, it is a time-consuming process. Also, when you're teaching the language, जब उन बच्चों को जो गांव से आए हैं, उनको आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, they want to learn it quickly, but you know as a teacher that they can't. ठीक है, you don't also have a choice. Spoken English का एक पार्ट होता है. देखो, हमेशा हम बोलते हैं ना कि स्कूल के अंदर wherever you teach, the principal or somebody will say that students are not speaking properly in English, put some efforts or bring in some more activities. Now that is again a problematic, because as a teacher you are getting 1 hour to teach them. In 1 hour, even if you are speaking, the other subject teacher are probably speaking in Hindi, Marathi, other subjects, and the exposure to the listening is very little. Okay, you might have, all the English teacher might have know that this term LSW, LSR and W. Basic, this is listening, speaking, reading, and writing. Now this is very basic of learning the language. So if you want to teach somebody, whenever you get confused, how should I teach? What kind of method should I use? Always remember that. How did you learn first language? Your first language, जैसे मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, whichever language that you have learned, how did you learn it? आप एक्चुअल में कोई एफर्ट नहीं डाले थे कि आपने did you read the grammar? ठीक है, did you prefer any book, any vocabulary? Nothing like that. You just learned it naturally. How did you learn it naturally? Because you were in that parent's environment.
यू आर एक्सपोज टू दैट लैंग्वेज। अब कोई अंग्रेज है मान लो, ठीक है, कोई भी काम करे हो, स्मार्ट हो, कैसा भी हो, बट ही कैन स्पीक इन इंग्लिश जस्ट बिकॉज ही इज इन दैट कंट्री। ठीक है, कल ही एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं बात नहीं कम्युनिकेट कर पाता। सो आई जस्ट गिव हिम दैट एग्जांपल दैट लर्निंग और नोइंग दैट लैंग्वेज और नॉट नोइंग इज नो बिग डील, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप स्मार्ट हो, कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लैंग्वेज नहीं आती आपको इंग्लिश, स्टिल यू विल प्रोबेबली बिकम अ साइंटिस्ट। ठीक है, और देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। तो फर्स्ट कन्विंस देम दैट इफ दे डोंट नो द लैंग्वेज देन इट्स नो बिग डील। अगर किसी अंग्रेज को आप बोलोगे कि मराठी में बात कर ले, दैट टाइम दैट्स द रियल टास्क। एक बार अपना भारत का बच्चा इंग्लिश में बात कर लेगा, पर दैट यूरोपियन माइट नॉट बी एबल टू स्पीक इन हिंदी और मराठी। ठीक है, सो वी स्मार्टर, वी आर, दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज, वी आर नॉट एक्सपोज टू इट, स्टिल वी नो द लैंग्वेज, राइट। तो ये हमको कन्विंस करना कि किसी को इंग्लिश आती है तो इट्स नो बिग डील, कि वो कोई स्मार्ट है, उसके सामने इंफेरिटी से जीने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब ब्रिटेन में कोई इंग्लिश में बात करता है तो उसको हो सकता है कुछ ना आता हो, जस्ट ही इज एक्सपोज टू द लैंग्वेज। So convince them that, and you are supposed to expose them to the listening skills now. The more they will listen, the better they will get at it. Okay. I have studied from the government school. Then I went to St. Xavier's College. So my defense was when I reached to the St. Xavier's, most of the students they used to speak in English because they came from that background, probably a convent school or their parents spoke in English, and I couldn't. So my first defense was that I often tell to the students, first accept that you can't speak. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ दोज हु कैन, उनको दिल से बताओ, एंजॉय करो, उनको बोलो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है बट आई एम लर्निंग इट, एंड व्हेन यू कमिट अ मिस्टेक एंड दे लाफ, लाफ विद देम। ठीक है, सो दे विल स्टॉप लाफिंग एट यू। So enjoy the process. That's very important, and accept that you don't know. So what my defense was, I used to sit beside any student, and first confession was, "Okay, I don't know English. I can't speak in English, but I'm learning. So can you help me?" Now, if somebody you ask anybody for the help, then they can't mock you. Now they lost that ability. किसी को आप हेल्प मांगते हो जिसमें आप कमजोर हो, अब उसी को हेल्प मांग रहे हो, तो अब वो हंसेगा क्या? अब क्या ही बचा है उसके पास? सो ही कांट डू एनीथिंग। सो टेल दोज स्टूडेंट इन योर क्लास दोज कांट स्पीक इन इंग्लिश, एक्सेप्ट इट पब्लिकली, क्लास के अंदर एकदम मजे से, और सबको बोल देने का कि सिखाओ मुझको। सो द स्टूडेंट विल स्टॉप जजिंग देम बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड इट, and then it will become easier for them to learn it. ठीक है, songs they can listen. ठीक है, it becomes difficult in the curriculum, like you are playing a song in a class, your principal might not agree with it. ठीक है, the parents might not agree with it, ये कौन सा टीचर जो गाने सुना रहा है क्लास के अंदर। ठीक है, that happened with me. ठीक है, I used to just एमिनम के गाने बजाता था मैं और बोलता था सब लोग गाओ। ठीक है, that actually clears their pronunciation. ठीक है, and the more they will listen to it they will enjoy it. एक रूल मैं बताता हूँ, एमिनम का एक कोई तो गाना है रैप गॉड। ठीक है, आई टेल द स्टूडेंट द डे यू कैन लिसन टू द रैप गॉड विदाउट द लिरिक्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, यू हैव लर्न द लैंग्वेज। उस दिन तुमको इंग्लिश आ गई समझ लो। ठीक है, तो दैट इज द टास्क। तो पहले उनको नॉर्मल वाले गाने सुनाओ जो वो समझ सकते हैं, जो स्लो है, देन एक्सपोज देम टू द, गिव देम अ टारगेट। दे इफ यू आस्क द स्टूडेंट टू लिसन टू द सॉन्ग दे वांट, ठीक है, तुरंत ही अरिजीत सिंह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहां वहां से कहाँ पहुंचेंगे कुछ नहीं पता, बट दे विल स्पीक क्विकली, बिकॉज कोई भी चीज आप तभी एंजॉय करोगे जब आपको समझ में आती है, समझ में नहीं आती तो नहीं आएगा। सो जस्ट गिव देम songs whose lyrics are very slow and ask them to sing along with the singer while the subtitles are there. एक बार अगर उसको समझ में आ रहा है then you will start enjoying, then you will start listening to the other singers. So convince your professors or whoever is your principal authorities that this is a necessary activity. Okay, it's for the learning. Next, the students believe that until unless they know it perfectly, they won't speak. जब तक उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तब तक उनको बात नहीं करना है, और वो कभी नहीं आएगी। ठीक है, राइट, परफेक्टली तो कभी नहीं आने वाली। छोटे बच्चे का ही देख लो ना आप, परफेक्टली आती है उसको, तो जैसे एकदम बच्चा पैदा हुआ पहली बार में एकदम फटाके से बात करने लगा, ऐसे तो नहीं होता। तो स्लोली स्लोली लर्न, तो कन्विंस देम दैट यू आर नेवर गोइंग टू बी परफेक्ट इन एनी लैंग्वेज, इवन इंग्लिश टीचर can't be perfect in the language. So language is very ongoing process. You will go on learning new words. No, any language, your mother tongue के अंदर आप कोई ऐसी नॉवेल पढ़ लो, आपको नया वर्ड पता चलेगा, आपकी मदर टंग में आपको पता नहीं था। सो इट्स वेरी ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, आप अंत तक लैंग्वेज को सीखते रहोगे। सो मेक देम स्पीक एट विच एवर स्टेज दे आर।
जहां पे भी हो वहां से उनको शुरुआत करनी है एकदम. Now another thing happens that bilingual is another method. Sometimes what happens is that as an English teacher you are told that you should speak in English, which is good. But what if the other student, any student or 50% of the students in your class doesn't understand the language? अगर उनको समझ में नहीं आती है तो फिर वो कैसे एंजॉय करेंगे आपकी क्लास को? सो दे विल लूज द इंटरेस्ट इन लर्निंग इटसेल्फ. तो सीखना तो दूर, वो इंटरेस्ट ही खो बैठेंगे. Sometimes the teachers are very adamant that I am an English teacher and I should speak in English only. ठीक है. बट आपके अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है वो लैंग्वेज, तो तुमको उस स्टेज तक उसको लाना पड़ेगा जहां पे वो समझ सकता है, एंड देन डिलीवर योर नॉलेज. अदरवाइज वो सब्जेक्ट का ही इंटरेस्ट हो बैठेगा. तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. If they don't know the English language properly, it takes like that. ठीक है. If they don't know the English language properly, switch to the mother tongue, mix English plus mother tongue, and make them involved in your class. ठीक है. अभी कभी कभी ये होता है कि स्पीकिंग के लिए we give them a topic and we ask them to come on the stage and speak in English. There are a few students who can't continuously speak in English while they need to switch to their mother tongue because they will get stuck. And if you give them this target, then they will never speak. So keep it flexible. Sometime if the student is not able to speak, just let him speak in whichever language he knows, so that he first builds his confidence to come on the stage and face the students. That fear is gone. Then ask him to mix up the language, some few sentences in English, few in Marathi, Hindi, whichever language he knows. Then slowly he will jump. Take care. As much as you want to teach him, he also wants to learn. Reading is very important. Students are never reading any books, nothing. They are not exposed to the reading at all. Okay. So you know that there is yesterday only I couldn't help one student. I had a lecture, so he told me what should I do. So I played him one video of Alina Rice. There is a YouTuber who teaches English. You might have seen her on Sandeep Maheshwari show also. So anyway, check it out. She's on YouTube. So she gives some of the tips. So one of the tips was making the student read every day. So in my class, what do? I give them a target. I compulsory make that they are all of them should supposed to buy the novels. Give them a novels whose language is easy first. जिनकी लैंग्वेज इजी हो, पहली बार पढ़ रहे होंगे, समझ में नहीं आएगा तो पढ़ेंगे नहीं. तो इजी लैंग्वेज जैसे कि सुधा मूर्ति हो, रस्किन बॉन्ड हो, तो ऐसे इंडियन ऑथर जो आसान भाषा में लिखते हो उनके नॉवेल सजेस्ट करो, सबको खरीदने लगाओ, 100 रुपए मिलती है. एंड देन मेक एक्सचेंज नेक्स्ट टाइम. एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को नॉवेल्स एक्सचेंज करेगा. एवरी डे आई गिव देम अ टारगेट ऑफ 10 पेजेस. जैसे मैं खुद साइन करके लिख के देता हूँ आज की डेट 10 पेजेस 5 पेजेस डिपेंडिंग ऑन द हाउ डिफिकल्ट दैट नॉवेल इज. So if you give them a target is very important when you're teaching language, because if you just ask them to read, they will never read. Just give them a number in their head. 2 पेज आप बोल दोगे तो 2 पेज पढ़ लेगा, 5 पेज बोल दोगे तो 5 पेजेस पढ़ लेगा. So give them a target, then follow it rigorously. So make them finish that one novel. नॉवेल से शुरुआत इसलिए करने का बिकॉज नॉवेल्स आर बेसिकली स्टोरीज. एवरीबडी लाइक स्टोरीज. ठीक है. उनको पहले पूछने का क्राइम पसंद है, क्या पसंद है तुमको, एंड सजेस्ट देम नॉवेल रिलेटेड टू द जॉनरा दे लाइक. बाकी आप उनको बोलो कि किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उनको कोई मजा नहीं आने वाला उसमें. सो मेक देम हैबिचुअल विद द रीडिंग. एक बार अगर नॉवेल पसंद आ गई सो दे विल बाय द नेक्स्ट वन, उसी ऑथर की या किसी की भी. सो वंस दैट हैबिट इज देयर ना, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू मूव फर्दर. ठीक है. राइटिंग, देखो क्लास के अंदर बच्चों को राइटिंग कराना इज द डिफिकल्ट टास्क. उस टीचर को वो पसंद ही नहीं करते. कोई टीचर बोलो उनको राइटिंग दे दे, अरे बाप रे बोर कराना है. ठीक है. बट देन दिस इज पार्ट ऑफ लर्निंग. ठीक है. गिव देम अ टॉपिक दैट आर इंटरेस्टिंग, लाइक देयर फेवरेट मेमोरेबल ट्रिप. ठीक है. देयर बेस्ट फ्रेंड, एनीथिंग दैट दे लाइक. Find some interesting topic from the internet, chat gpt, whichever you can, and give them those topic and ask them to write about it, and also correct them. If you just read and don't do anything na, they feel ki it's useless activity. So correct their language, mark it with the red color or something, so that they feel that the teacher is taking an effort, so they will put more efforts into it. ठीक है. So go on doing it continuously. ठीक है. टारगेट रख के. So this is one way. ठीक है. बाकी make them speak. एक peer group. There I had one friend who came from a rural background and he couldn't speak in English. So our professor, ठीक है, I personally very much like this professor. She had such a great impact on me. Uh, Madhuri Gokhale, I remember her name and I feel proud to take her name. So what she did is that
she made the pairs of the students. She made them forcefully to be friend with each other. One who knows good English and another one who can't speak. So if they are together and motivate the other person to teach him the other one. Okay. And so that will help. At least it helped one of my friends. So it's, I think it's very practical. At if you conduct this activity and if 20% students are benefited with it, then you are that activity is successful. Okay. Basically this is the same thing that you are a facilitator and you a English teacher plays a, now the technology is there. Technology plays a really important role. Like YouTube, I during my graduation, as I told, I went to St. Xavier's and I accepted that fact first that I don't know. I used to watch Friends a lot. I got into that habit of watching web series. Now the students shouldn't get addicted to it, but you can give them a web series where the speaking is more, action is less. Okay. If you give them some action type of web series, then the language, the specifically the Hollywood one, they speak very little. Okay. The Friends one, the web series that you might know, they is basically based on dialogues only, exchange of dialogues and sarcasm. So it's basically they will be more exposed to the listening. So you can suggest them, even give them the episodes. Give them on Sunday you are supposed to watch 3 episodes. That is your target. And also when you give them these targets, just ask them to write about what they learned, what they like. So that way they will also be writing. Okay. Also ask them and talk about it, what they liked in English. So speaking, writing, everything should be done. Okay. Technology is crucial. That there is a Spotify, you will have podcasts, then different kind of podcasts has come. Currently I'm listening one stories of Mahabharata, Shudukto Bhavnik, very interesting, about the small stories from Mahabharata. Whenever I travel, I keep one earphone and listen. So you can suggest that to the students while they are traveling. They can do it at home also. So many tools are there for the vocabularies and all. This I have explained. So the next teacher has already come long time ago. So I will end. If anybody has any question, you can ask me. As long as the opportunities are concerned, there is a dearth of English trainers also. In the corporate, people want to learn English. Okay. The students, maybe from any background like engineering, if they have to go for the job interview, then the other person is asking them the questions in English. Nobody cares about their language. As long as he speaks English, he is hired. So you can help them. Uh, in competitive exams, English is necessary. Okay. And overall development also, those students who wish to go to foreign countries for further studies, they also need English. So not just as a teacher in school, there is a lot of scope in corporate world also for the English trainer. Okay. Find your opportunity. Also YouTube is one of the medium that you can explore. Okay. It is really great if you are passionate about it. You can help the people free of cost also, and that way you can even earn money later. So keep your passion, and also at the end of the day you will be helping the students. Once they learn the language, they will be very confident. At least in India, if somebody knows English, they will be very confident. Okay. And confidence is everything to do anything in life that you can do. Thank you so much. If anybody has any question, you can ask.